जी माता जी। जय श्री माता जी। हम लोग जय सब श्री शुरू माता जी। करते हैं। जय श्री माता जी। सब हम सब लोग नतमस्तक होकर श्री माता जी को वंदन करके कुंडली उठा के बांध लेंगे। We'll all collectively go down to Shri Mata Ji and जय श्री माता जी। अभी बंधन लेने के बाद फिर से महसूस करेंगे। We'll observe the change in our vibrations in both our palms and on top of our head. आंखें बंद करके हम अपना तालु भाग से महसूस करेंगे। दोनों हाथों में समान तरीके से वाइब्रेशंस आ रही है। From top of our head, we'll observe on both our palms if you're getting equal vibrations. We'll observe Sushumna Nadi, Sahasrara, and from there we'll observe the center of both our palms. सुषुम्ना नाड़ी को महसूस करेंगे, ब्रह्म रंध्र को महसूस करेंगे और वहां से अपने दोनों हाथों के सहस्रार को महसूस करेंगे। अभी अपना लेफ्ट हैंड श्री माता जी को, राइट हैंड धरती माँ पर रखेंगे। वी विल पुट आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स माता जी, राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। अब महसूस करते रहेंगे राइट हैंड से कुछ धरती में जा रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड से कुछ अंदर आ रहा है कि नहीं। We'll observe if something is going down from our right hand into Mother Earth and if something is coming in from our left hand. Shri Mataji, please remove all our past thoughts and conditionings from our ईड़ा नाड़ी and give it to Mother Earth. श्री माता जी कृपा करके हमारे ईड़ा नाड़ी में जो भी असंतुलन है, जो भी भूतकाल के विचार है और जो भी कंडीशनिंग्स है, उन सब को निकाल के धरती में विलीन कर दीजिए माँ।
भी महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की सभी उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आ रही कि नहीं. विल कंटिन्यू टू ऑब्जर्व if you are absorbing cool air from all the fingers of the left palm. अभी अपना राइट हैंड शिमांशु जी और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर और राइट हैंड टुवर्ड्स शिमांशु जी लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई. Srimata ji, please remove all our future thoughts, action, planning, and heat from our Pingla Nadi and give it to ether, sky element. श्रीमाता जी कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी भविष्य का विचार है, जो भी प्रणाली का हम बना रहे हैं, जो भी अधिक गर्मी है, उसे कृपा करके आकाश में विलीन कर दीजिए मां. अभी महसूस करते रहेंगे राइट हैंड में कौन सी उंगली में से ठंडी हवा आ रही है और लेफ्ट हैंड में से हवा जा रही है. You'll observe if you're absorbing cool air from any of the right hand fingers and if you're ventilating from our left palm. अभी अपना लेफ्ट हैंड अपने गोद में, राइट हैंड आग्नेय चक्र पर. We'll put our left hand towards Mataji and right hand on the Agnya Chakra. And here we will say Lord's Prayer. यहाँ Lord's Prayer बोलेंगे. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever and ever. Amen. हाथ वही रखे रहेंगे. Our right hand will remain there on the front Agnya. As we'll observe, if we are absorbing cool air from our left palm, और महसूस करते रहेंगे लेफ्ट हैंड की
उंगलियों में से ठंडी हवा अंदर आ रही कि नहीं, जहां हाथ रखा वहां ठंडा हो रहा है कि नहीं। क्षमा, क्षमा, क्षमा। ये राइट हैंड सर के पीछे, we'll put our right hand behind our head and raise our head towards the ceiling, आकाश और आकाश की ओर उठा लेंगे। और यहाँ बोलेंगे, माँ अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कृपया मुझे माफ कर दे। श्री माता जी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी मिस्टेक्स आई हैव डन नोइंगली और अननोइंगली। हाथ वही रखे रहेंगे थोड़ी देर के लिए। वी लेट आवर राइट हैंड रिमेन ऑन बैक अगेंस्ट सम टाइम। ये अपना राइट हैंड को तालू बाग पे रखेंगे। विल टेक आवर राइट हैंड, पुट इट on top of the head and we rotate the scalp 7 times, 7 मर्तबा घड़ी की दिशा में घुमाते हुए माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए। श्री माता जी, प्लीज स्ट्रेंथन और सेल्फ रियलाइजेशन, मन ही मन में 7 बार, इन द हार्ट 7 times। हम ये आहिस्ता आहिस्ता हाथ को अपने गोद में ले आएंगे। विल स्लोली ब्रिंग आवर बोथ palms onto our lap। वी विल ऑब्जर्व फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए महसूस करते रहेंगे सर के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों हाथों में क्या हो रहा है।
अभी अपना राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर, विल पुट अवर राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हार्ट एंड यहाँ मॉर्निंग प्रेयर लेंगे, विल टेक मॉर्निंग प्रेयर। Shloka, which I had told Mahatma Ji that he should put it first. He said, I was a very small girl, but he listened to me, which is a beautiful thing. Pratar namami. The first thing you have to say, Pratar namami, Rudhi samspuradma tattvam, Satchit sukham paramahansa gatim turiyam. Meaning, early in the morning, I pray to that principle of my spirit, which is the truth, the attention and joy, so that I should go to the highest state of my ascent. Samspuradma tattvam Satchit sukham Paramahansa gatim turiyam Yat swapna jagar Sushupta Bhavaiti nityam Tad brahma Nishkalamaham Nacha bhuta sangha. अर्थ कड़ा का प्रातर नमामि, मैं सवेरे उठ करके नमस्कार करता हूँ। हृदय संस्फुरात्म तत्व, हृदय में स्फुरन पाने वाले उस तत्व को, कौन सा तत्व है? डिवाइन लव। उस तत्व को मैं याद करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रातः नमामि हृदय संस्फुरात्म तत्वम सच्चित सुखम, सच्चित सुखम, जो सत्य है, चित है और सुख है। परमहंस गति तुरीयम, तुरीय दशा उसे कहते हैं जिसमें आप आ गए। पार होने का मतलब है तुरीया, आप उस दशा में आ गए हैं, परमहंस गति की दशा में आ गए। परमहंस गति तुरीयम, उस दशा का, उस अवस्था का मैं नमस्कार करता हूँ। अभी तो जो आए नहीं वो गा रहे हैं, लेकिन आप आ चुके। प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद दस्मो सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर, जो स्वप्न जागर, स्वप्न में जागृत अवस्था में सुषुप्ति मवई की नित्य, सुषुप्ति अवस्था में सब में नित्य रहता है। चाहे आप जागते रहे, चाहे आप सोते रहे, चाहे आप सबकॉन्शियस में रहे। सुषुप्ति माने सबकॉन्शियस में, और उससे भी अनकॉन्शियस में रहे, जहाँ वो नित्य रहता है। यह स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम्, वो अलेपा, वो निर्लेप ब्रह्म मैं हूँ। न कि भूत संघ, मैं ये जो भूत संघ है, भूत संघ वाले 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मन बुद्धि जो है वो मैं नहीं, लेकिन वो ब्रह्म है जो नित्य अविनाशी हमेशा हर स्थिति में रहता है। इस श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदय संस्फुराद तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिं तुरीयम यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम् न च भूत संघ। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है कि हम वो हैं जो निर्लेप, निरंजन, निराकार ब्रह्म है। हम ये जो भूत संघ है, जो 5 महाभूत मिलकर के उनके संघात से बना हुआ, जो बाहर का
ढकोसला है वो नहीं, जो अविनाशी अंदर विराजता है वही हम है। ये तभी होगा जब हमारा चित्त उसमें बैठे। चित्त तो वहाँ बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया है, किंतु वो चित्त अभी भी बाहर की ओर दृष्टि की ओर। उसे जैसे आप अंदर की ओर दृष्टि कर लेंगे, आप परमहंस गति के दशा में बैठेंगे। उस गति पर है, आपको बिठा दिया है उस गति पर कि आप परमहंस हैं। लेकिन परमहंस को अपने जो कीचड़ से लगे हुए पैर हैं उन्हें साफ करके और अपने आसन पे उस इज्जत के साथ बैठ जाना चाहिए, जैसे कि कोई राजा अभिषेक के बाद बैठ जाता है। अभी हाथ अपने गोद में ले आएंगे। नाउ विल ब्रिंग आवर राइट हैंड बैक ऑन आवर लैप एंड अगेन ऑब्जर्व एंड एंजॉय द सहस्त्र ऑन टॉप ऑफ आवर हेड एंड ऑन बोथ पाम्स। अभी हम फिर से अपना सहस्त्र का आनंद लेंगे और दोनों हाथों के सहस्त्र का भी। with 3 महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे। We will take the 3 महामंत्ras followed by गणेश मंत्र। साक्षात् श्री
माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। We'll continue to enjoy our Sahasrara and the Sahasrara in both palms. अपना सहस्रार का आनंद लेते रहेंगे और दोनों हाथों की सहस्रार को भी महसूस करते हुए ध्यान में रहेंगे। यही स्थिति में श्री माता जी का 1983 वाला विशुद्धि चक्र दिल्ली में जो स्पीच है वो अभी सुनेंगे। We will now listen to the speech that is the famous 1983 विशुद्धि speech in New Delhi. The prophets are born and create a ripple in our consciousness. A new dimension to our understanding, to religion, dharma, which has to be assimilated and has to be understood that whatever the previous prophets have said has to be culminated into something else. So, as we can say, Muhammad Sahib has said that all these prophets who have come on this earth have created a new ripple and also has sustained
human beings with a newer evolution, a newer folly age opening into them. The idea of human beings of newness is that we have to give up all that is old and we have to become new. Or they think that newness means absolutely a juxtaposition condition in which one has to rise. And this is the cause of the folly of many people in the West as well as in the East. Whenever a new theme started, like we can say that first of all, a great saint came on this earth and he found that the people are following the idol worship in a very wrong way. Because it is said in the Bible that whatever is created by Mother Earth should not be reproduced and worshipped. So they created another extreme religion out of it, saying that nothing should be worshipped, but it is said whatever is reproduced by the Mother Earth. So there are so many such things all over the world which are created by the Mother Earth. So they should not be worshipped by reproducing them and making images out of them. When such a prophet died saying that this should not be done, one should not worship images, the other side of it started the extreme, going to the extreme that there should be no worship even if the Mother Earth has created. So all the human beings were divided into extreme conditions. One situation comes in where one has to say that this should not be done. So people take up that theme and just start building up onto that and saying that this should not be done as told by the Prophet. Of course, after the death of the Prophet, when the Prophet is living, nobody listens to him. They all torture him, bother him, do all kinds of things, and ultimately they may even kill him. Then another point is, every prophet is born at a different period of time. So depending on the time when he is born, he talks of a particular problem. Say when Muhammad was born, Muhammad Sahib said very clearly that you should not drink. So people said that all right, we will not drink but we can smoke. So he had to rectify himself. He said, I am the last who has come, but he found that it is not so. So he came back again as Nanaka to tell people that do not smoke also. Like that, the persons or the group of persons who follow one incarnation go to another extreme and try to push down all the traditions, all that has come so far built up, like cutting the whole tree and start their own tree, which is artificial. Then the quarrel started when Muhammad Sahib was driven to another level, and then Nanaka's disciples were driven to another level where they just thought they have no relationship with each other, which is not true. Afterwards also, so many such things have happened in this world. We can see that any revival starts, people go to the extreme of it and get completely ruined. In Christianity, you will find the same thing happen. When Christ came in, whatever problems he faced, he talked about them. But the main thing he had to talk about the resurrection, about the ascent, and he talked about the ascent. He talked about the spirit, and in his resurrection he showed that he ascended.
But people did not stick to that point. They never thought that you have to ascend in Christianity. Nobody bothered that you have to ascend. They took a small little things from somewhere. Also, a person came later on called Saint Paul, who was not at all with Christ or anything. He started a religion of Christianity which was all absurd, against Christ, anti-Christ. None of these prophets have discarded any prophet who came before them. Now the problem came in that one has to integrate. And Muhammad Sahib knew that a day will come when this integration problem will start. And he talked a lot about Sahaja Yoga, in the sense he said when the resurrection time will come. He talked more about resurrection than about doom time. Most surprising thing is about Qayamat. He spoke very little. He spoke really about the resurrection time, because that was the problem. The problem that they face, they talk about. I have told you how Buddha talked only about Atma Sakshatkara and not about God, because those people who went to God or thought of God or just studied God thought they were gods themselves. So he said, you must get your self-realization. Then Mahavira, who talked about the hell where people can go, because that was his job, the part of it and the part of it and the part of it and the part of it. These are the different aspects of human beings which they had to awaken. Different aspects. When Muhammad Sahib started teaching people to do namaz, people used to laugh at him. What is he doing? Why does he want us to put hands like this? Why does he want us to sit down or put our hands on the knees? Now you understand, as Sahaja Yogis, what it means, that he wanted us to improve our nabhis first, our dharma first. All this movement was to jerk out the kundalini, but without realization being there, namaz would not work out. You may break your knees, you may do what you like. But the extremes people catch hold of it and not the reality. And they make a fuss out of it, and they may create a big organizations and things, and that's how it is called. So when he said that Allahu Akbar is to be said with your fingers in your ears, you all say that, isn't it? All the Sahaja Yogis say with this finger in their ears, Allahu Akbar. Because you know this is the finger that represents the Vishuddhi, and the Vishuddhi chakras, deity Shri Krishna, becomes the Virata, the Akbar. So when you say about Akbar, you have to put your fingers into your ears and you have to say Allahu Akbar. Whole relationship and everything was never understood. For Indians, Shri Krishna was their avatara. For Western people, Christ was their avatara. For other people of Arabistan, Muhammad was their avatara. How can that be? They are all related to each other. So how to relate it to each other is a problem of Sahaja Yoga. When they come from different communities and different fixed ideas, it is impossible to stir them and tell them that you are all one. We talk of Hindu-Muslim unity. For example, Muhammad Sahib didn't know there were problems like that, but Nanaka did say, we have come to do Hindu-Muslim unity. But in the outside, if you do the Hindu-Muslim unity or any unity, it doesn't work out. It doesn't work out in the outside relationship. Even your brother may not be your own brother. If it is working outside. But if the spirit is awakened within you, then spirit is the one which is the connection with the whole, with the Virat, with the Akbar. When Akbar is to be felt, you have to have your realization, otherwise you are just talking in the air. You don't know who is this Akbar. You have to get connected to that Virat, and that Virat is the primordial being.
We are actually not integrated at all because we have different incarnations. Even if you are not absolutely atheist, even if you don't say that you do not believe in God or believe in something else which is anti-God, even if you believe in God, you believe in God in fragmentations, in his different aspects. But you don't see him in collectivity. You have to see that he is one God. Everybody says he is one God. Of course he is one God. I am one person, but I am also a housewife. I have to do some work for my household. I am also a sister of somebody. I am also your mother and mother of my own children and also a grandmother. So I have so many various aspects of my work which I do. One person has to do it. When we talk of God as one, we think he is Rock of Gibraltar, just one piece. Even Rock of Gibraltar, if you go and see, it is not one piece. Anything in this world you cannot say is one piece. It has to be a compound or a mixture of something. Then how can God be just one piece hanging in the air like one? God is one. So we will not have any other aspect of God. God has many aspects, which one has to understand. So there are two concepts which work out in this world, I feel. One is that they believe that there is only one God and there cannot be many aspects of God, which is wrong. Christ has said, those who are not against me are with me. So this kind of a mental conception about God, that he is just like Rock of Gibraltar. See now this pendant you have done it, there are so many lights. They are all giving one light to all of us. They are not giving separate lights, are they? How are they fighting with each other? What is the fight going on? They are adding to the same light. This is one pendant, but we have so many lights. We cannot do with one light. At different periods, a person has to be born. Every period, a person had to be born to enlighten one aspect of human awareness and consciousness. Variety has to be there because human beings are varied. And the variety is that supposing you are supporting somebody's right-sidedness, then there should be somebody who will come and support the left-sidedness. And it is all done so well within us, but it is only human beings in their obstinacy and in their ignorance cannot see it. We all are made the same way, if you see in the whole world. Of course, there is variety in appearances. Maybe an Indian looks like an Indian, but in India only you can see Indians have so many different faces. You can find all colors and all kinds of things on their faces. In India is the only place where you find all kinds of people. You can have people like Russians, you can have people like Japanese, Chinese, you can have people like Africans. All kinds of people are in this country to show that all people can be called as one race as Indians. Now, it is not always ignorance that makes people forget that we are all one. Every human being laughs the same way. Does he laugh in a different way? If he has to eat the food, he masticates the same way. He cries the same way. When he cries, his crying is the same. His actions are the same way. If a woman is angry with her husband, yesterday I saw Birju Maharaja's program with my brother, and I was amazed how universal we are in our expressions. He was showing how a woman gets angry with the husband and how she behaves. If you see those actions which are depicted, you will be amazed that they are done by all the women all over the world. And the reaction of man, if you want to see, all the men act in the same way.
My husband was secretary to Shastriji, you know that. And he went with Lal Bahadur Shastri to Tashkent at his last time. But also he went once to Yugoslavia. And there, who was it? General Tito was where? Huh? Yugoslavia. And General Tito's wife, you see, got very friendly with Mrs. Shastri. Both were very friendly. So Shastriji warned his wife, see now, you are great friends, and now don't start crying like an Indian woman when you leave. So poor thing was controlling her tears all the time. But she told me I was controlling, but it is she who started crying. And such a lot, and then she started crying loudly, hugging me. So I just could not control myself. I also gave in, I also started crying. And both the husbands started looking at the ground. So basically, all the women, all the men in the whole world react the same way to a situation. And you can see their reactions very clearly when it comes to children. They all act in the same way, in the same manner. Supposing they hear that two children are caught up in the air somewhere or something is happening to them, the whole world will be worried about them, how they are going to be saved. Something must be done to save them. The whole world will be praying to God, oh God, please save these two children are caught up there somehow or other. Everybody will be worried as if their own child is there. Even when it comes to death, I have seen that. When there was the spacecraft was going to land, and people were worried that they may be lost. I know in every masjid, in every temple, in every church and everywhere, they were Americans. Nobody thought of Americans, what religion, anything. To them it was a part of human beings, you see. The human bondage started acting. That time they never thought what country they were, what Americans have done to India, nothing of the kind. They just thought, oh God, these people are, oh God, please save them. Everybody prayed to them, prayed to God and prayed for them that they should be saved. That time, what had happened to us? How did we forget? We touched the reality at that time. And that is what it is. Anybody who tries, these Jews, when they were troubled by Hitler, everybody's sympathies were with them. But when these Jews started troubling the Muslims there, everybody's sympathies were with Muslims. Then why don't you think on religion? Even the Jews had sympathies with Muslims. Then we don't think what differences we have with them. None of the people I heard said, all right, they are punished or it's all right. Not even Jews. So the part that is within us, which is human, becomes absolutely troubled when we see some other human being is tortured. Of course, with these horrible ideas of fanaticism or maybe fear or maybe aggressiveness or whatever it is, we may try to be cruel. If you ask the people of Germany, how do they feel about the massacre? They just put down their heads. They said, we don't know, we were not ourselves. How we did it, we don't know. How it happened, we just don't know how it worked out. So when the violence is over, you just start feeling, oh God, I am a human being, they were human beings. So this oneness comes in. The feeling, the awareness comes in. It is not so in the animals so much. If they have to work, if they have to be active, they will be together. But if something dies, they are not bothered. Even if a child, or say of a monkey, is sick, the mother will be worried. She'll be screaming, shouting. But if the thing is dead, she will just throw away the child on one side and get up. It's only the human beings who can feel that oneness. So in our nest, this was given to us by Sri Krishna's advent. He gave us this awareness of human, or he keeps that awareness within us. We have to accept him as a person who gives us this awareness of human relationship.
And whenever there has been problem, like this, somebody told me that in Somnath people believe that Sri Krishna came as Muhammad Ghazni to give lessons. So many Hindus believe. It was Sri Krishna who came as Muhammad Ghazni to give a lesson to these horrible Brahmins who were making money out of that temple. So many Hindus believe that. That to punish these horrible Brahmins who were making money, he had to come as Muhammad Ghazni to break that idol which was giving them so much money, and they were making all kinds of you can say extractions from the poor devotees who were devoted to that temple. It was only he could do it. So we have to understand that when we are not integrated, we cannot feel the integration of our being. We are not integrated, that we have to realize. Our mind works in one way, our heart works in another way, our liver works in another way. As I told you, I am quite surprised that when they have told that don't drink, those people who follow these religions still go on drinking. But apart from that religion, forget it. They see a man going into a pub and falling and faltering, coming out, still they enter into the same to get to the same situation. Why? Because the mind tells them not to do it. Mind says don't go. The brain says don't go. But their heart is weak. They cannot. The habits. All the habits come through this kind of disintegration. We are so disintegrated within ourselves that if a person wants to do something, he just does the opposite of it. And that is the reason why we accept this kind of juxtapositions in life, what was told by him about music and about everything. Music has come out of God's love to us. Anything that is not for God's love is not music. I'll give you an example. There was a lady who used to do some sort of a kawali. And I was on the censor board, I censored her kawalis. And I said, this is not a kawali. She said, why? I said, this is called as mujra. This is a horribly sensuous and horrible thing. It's an insult of God. You can't sing like that. So she said, no, this is kawali. I said, do you know kawali was never sung by women and was never done in this dirty fashion, the way like a prostitute you are singing this kawali. Is always, all the music was in the praise of God. And that's why Muhammad Sahib said that all the music should be in the praise of God and should not be. So we had other things like Naat and all that. But you find, even at the time of Sri Krishna, all the music was to be just done for Rasa. Ra is energy, Sa means side. With Radha, they were playing together, playing Rasa, and that's how they were doing the circulation of the energy to integrate themselves and singing the music. It is for that. Sri Mata. जय श्री माता जी। आंखें बंद करके यही ध्यान की स्थिति में थोड़ी देर रहेंगे। विल कंटिन्यू टू स्टे इन मेडिटेशन इन दिस स्टेट।
जय माता जी। विल जॉइन बोथ आवर हैंड्स। दोनों हाथ जोड़ के माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। विल रेज और कुंडली टेक बंधन। जय माता जी। अभी जो ध्यान को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो जाके समुद्र में मिल सकते हैं, यानी निर्मल धाम, प्रतिष्ठान या इटरनल नॉलेज सेशन में जा सकते हैं। एनीवन हु वांट्स टू कंटिन्यू टू मेडिटेट, you can please go ahead and join Pratishthan, Nirmal Dham or Eternal Knowledge sessions. On this platform, now we will have Vishuddhi clearance. Today being a Saturday, we will have Vishuddhi clearance. ये आज शनिवार है, तो ये मंच पे हम विशुद्धि क्लियरेंस करेंगे। विशुद्धि क्लियरेंस हम अपना केचरी मुद्रा से करेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे कि विशुद्धि में गर्मी है कि नहीं। ठीक है। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड शिमात्री को राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए। विल पुट और लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स शिमात्री जी, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट विशुद्धि। और आप लोग देखिए कि लेफ्ट हैंड की उंगलियों में से ठंडी हवा आ रही कि नहीं, जहां हाथ रखा वहां ठंडा हो रहा है कि नहीं, और ब्रह्मरंध्र खुला कि नहीं। ये तीन चीज देखने पड़ते हैं कोई भी चक्र साफ करने के लिए। अभी मेरे को बताइए आप लोग, जहां हाथ रखा वहां ठंडा है कि गर्म है, और लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली में से ठंडी हवा आ रही है। यू पीपल लेट मी नो if you are able to observe that you are absorbing cool air in the left hand fingers, and where you put your right hand if it is hot or cool. संध्या इंगले, आपने हाथ उठाया, आप बताइए क्या कुछ क्वेश्चन है। जय श्री माता जी भैया। हाँ जयश्री दीदी, कोई क्वेश्चन आप था क्या? हाँ, क्वेश्चन भी था भैया। हाँ हमारे यहाँ पे सहयोगी है, वो भैया और दीदी, उनको बेबी हुआ है, तो श्री माता जी की सेवा करे या नहीं, ये पूछना था। हाँ, बाद में आंसर कर लेंगे। मैं पद्मा हाँ, दीदी का सेशन होगा तब पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अभी जय। हाँ, अभी लेफ्ट हैंड शिमा रिकॉर्ड करेंगे। सब लोग लेफ्ट हैंड शिमा रिकॉर्ड, राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे रखेंगे। अभी मेरे को बताइए, राइट हैंड जो वैश्व विशुद्धि पे रखा, लेफ्ट विशुद्धि पे रखा, अभी गर्म है कि ठंडा है। एंड लेफ्ट हैंड में उंगलियों में हवा आ रही कि नहीं। क्योंकि विशुद्धि इज ऑल अबाउट सेंसिटिविटी। विशुद्धि से ही हमको ठंडा गर्म ये सब महसूस होगा, उंगलियों में एहसास होगा। भैया मेरे बेसुधी उंगली जल रहा है। कौन सा? लेफ्ट वाली उंगली। लेफ्ट वाला। लेफ्ट। ओके, और जहां हाथ रखा वहां क्या हो रहा है? यहाँ नहीं पता चल रहा कुछ। और बाकी उंगली में, लेफ्ट हैंड में? बाकी सही है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इसलिए पूछा मैंने। राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पर रखे रहेंगे,
और देख महसूस करते रहेंगे. वी विल कीप ऑब्जर्विंग. अभी बोलिए दीदी, कुछ फर्क आया? नीचे वाला उंगली में तो फर्क आया, पर विशुद्धि के पास नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, वो आपको अल्लाह अकबर करना पड़ेगा तो समझ में आ रहा है. ठीक है, मगर आपको पता चला ना लेफ्ट हैंड की उंगली में फर्क आता है ऐसे हाथ रखने से? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, 1-2 मिनट भी नहीं लगेगा, फटाफट प्रोसेस शुरू हो जाता है. बाकी लोग बताइए, लेफ्ट हैंड की उंगलियों में ठंडी हवा अंदर आ रही है? Others also please let me know if you are absorbing cool air in the left hand. बोलिए दीदी, सुनाई ना? अब बोलिए. You can unmute yourself, Sunaina, and let me know you want to talk. भैया आवाज आ रही है? हाँ बताइए. भैया मेरा हार्ट, लेफ्ट हार्ट कैच कर रहा है कल से, ओके, फिर क्या कर और रहे हैं? वाइब्रेशंस भी मुझे नहीं फील हो रहे हैं। ठीक है, पहले फील होते थे? भैया कुछ दिन पहले तो जैसे मैं विराट से जुड़ी थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा फील होने लगा था, लेकिन फिर मेरी थोड़ी स्थिति गड़बड़ हुई तो मैंने एक सहयोगी दीदी से हेल्प ली, तो उन्होंने मेरा बैक से क्लियरेंस ठीक किया। है, ओके, म्यूट कर लीजिए. ठीक है, अभी सब लोग हम अभी हम लोग निर्विकल्पा मेडिटेशन करते हैं. ये फटाफट हो जाएगा, उससे सबका विशुद्धि क्लियर हो जाएगा. ठीक है, म्यूट कर लेते हैं. अभी ये वीडियो हम फॉलो करेंगे और ये 3 स्टेप करेंगे. Keep your eyes open. Now all the children should put their hands like this. All right? And watch me. Lift your tongues and put them back as much as possible. Turn it backward. Let it feel the bliss of the divine on its tip. Retournez votre langue dans votre palais autant que vous le pouvez. Now put your chin down, touching your... Don't close your eyes. In complete surrender. Put the chin. Vega? Appuyez votre menton sur votre gorge. But don't close your eyes. Sans Pay attention to your sahasrara. sans fermer les yeux, avec l'attention sur le Sahasrara. Loosen your hands fully.
on the sides. Make them loose. Sit straight. Détendez les muscles de vos bras. Do not touch the palate. Got to them. Ne touchez pas le palais, mais allez plus en arrière, avec la pointe de votre langue. Now breathe in. Do not push back the tongue. Keep the tongue where it is. Breathe in. Inspirez. Now raise your stomach without taking out the breath upward, pushing the air upward towards the lungs. Push your stomach in. Rentrez votre estomac et poussez l'air dans vos poumons. Attention on the Sahasrara. L'attention sur le Sahasrara. You start seeing light through Sahasrara. Sort of the Sahasrara becomes like eyes. Now leave it. Leave it now. Maintenant, détendez-vous. Raise your. Relevez votre tête. Now put back your heads. Put the fingers. Put the attention to your Sahasrara, that's all. Don't say anything, no mantras. Take out your tongue. Push it back. Take in your breath. Push the stomach. De nouveau même exercice. Retournez votre langue. Rentrez votre estomac. Respirez. That's good. Now watch me continuously without blinking, Maintenant, nous regardons schéma. without any pressure on the eyes. Nous regardons schématique sans scier les paupières. Attention on the Sahasrara. L'attention sur le Sahasrara. You can do it without blinking. May God bless you. This is it. Physically, we have worked out our attention. And
on our Vishuddhi and on our Agya. Ainsi, nous pouvons physiquement aider l'ascension de notre attention au niveau अभी आप लोग बताइए, आप लोग कर पाए? वेरी एबल टू डू? और किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी ऑल पीपल एबल टू डू एंड एक्सपीरियंस इट? हाँ भैया। ओके, जय कर श्री पा रहे, जय श्री माता जी। ओके, ठीक है, कर पा रहे। लेफ्ट लेफ्ट स्वादिष्टान, लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट नाभि, तीनों पकड़ा रहे थे। पकड़ा रहता है, ठीक है, वो पकड़ा रहा, अभी रहा था। हाँ हाँ, ये करते वक्त। और आपका सहस्त्रार खुला है? सहस्त्रार तो खुला है पर पाइप नहीं बन रहा है, कभी हाँ, कभी बनता है। ओके। बाकी किसी को कोई डाउट कैसा करना है? श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। एक बार आप हिंदी में बता देंगे क्या क्या किया हमने कैसे करना? हमने पहला स्टेप किया था, अपने जीभ को पहले जैसे दिखाइए, फिर से बताता हूँ। ये देखिए, श्री माता जी ने पहला 3 स्टेप्स है इसमें, ठीक है। पहला स्टेप में माँ ने यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला था कि अपने जीभ को उल्टा करिए और मोड़ लीजिए, ठीक है, और ऊपर पैलेट को टच नहीं करना, पहला स्टेप। उसमें फिर बोलेंगे, माँ बोलती है अभी अपने गर्दन को नीचे ऐसा ऐसा रखिए, ऐसा ऐसा रखिए। अभी फिर यहाँ थोड़ी और देर बाद माँ बोलती है कि अभी श्वास अंदर लो, श्वास अंदर लो, मगर आंखें खुला ही रहना, पूरा सेशन पूरा आंखें खुला रखना। श्वास अंदर लो, और श्वास अंदर लेने के बाद पेट को भी अंदर लो, ओके। और थोड़ी देर ऐसा रहने के लिए बोलती है श्री माता जी, फिर बाद में श्वास छोड़ दो। पहला स्टेप हो गया। अभी फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में श्री माता जी बोलती हैं, छोड़ने के बाद अभी अल्लाह अकबर जैसे बोलते हैं वैसे दोनों उंगली, विशुद्धि की उंगली कान में रखना है, और फिर बाद में अपना जीभ को फिर से वापस उल्टा मोड़ना है, और ऊपर पैलेट को टच नहीं करना है। और फिर बाद में श्री माता बोलती है अभी श्वास लो अंदर, ओके ठीक है, श्वास लो। श्वास लेने के बाद फिर पेट को अंदर करे ताकि हवा ऊपर आए, और ये थोड़ी देर रहने के बाद श्री माता बोलती है अभी छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिया। अभी फिर बाद में श्री माता जी क्या बोलती है, अभी कंटिन्यूअसली मेरे को देखो। आप श्री माता जी को बिंदी देखते रहेंगे और थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, और फिर माता जी लास्ट में बोलती है अभी इससे क्या हुआ कि फिजिकली हमने अपना विशुद्धि और आज्ञा क्लियर किया। ये 3 स्टेप थे, ठीक है। अभी कुछ हुआ कि नहीं, पहला ब्रह्मरंध्र खुला कि नहीं खुला, ये देखिए कैसा करते हैं। हमने यहाँ विशुद्धि खुला है, ठीक है, विशुद्धि पे यहाँ कर रहे हैं सब लोग। अभी क्या करिए, दोनों कानों को, ऑल ऑफ यू व्हाट वी हैव टू डू इज लेट्स यूज बोथ आवर हैंड्स एंड क्लोज द ईयर्स नाइसली। दोनों हाथ से अपने कानों को पूरी तरह हम अभी बंद कर लेंगे, ठीक है, और आंखें बंद कर लेंगे। वी विल क्लोज आवर आईज, वी विल क्लोज आवर आईज। Take out your tongue. Push it back. Take in your breath. Push the stomach. de nouveau même exercice. अभी आंख खोल लेंगे। Now we will open our eyes and bring both our hands back on our lap. दोनों हाथ अपने गोद में ले आएंगे। अभी ये बताइए, आपको मेरा आवाज आ रहा था? वेरी एबल टू हियर मी? नहीं भैया, बिल्कुल क्लियर। हाँ, आवाज नहीं। आ रहा, नहीं आ रहा था? आ रहा है आ रहा है, आ रहा है भैया। तो ये कहाँ से सुन रहे थे? आत्मा से। कहाँ से सुन रहे थे? नहीं भैया, मैंने कान में उंगली डाली ना तो आपकी हाँ, आवाज नहीं थी। करेक्ट।
अलका दीदी आपको कान में उंगली डाले तो आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं भैया ये ना वेरी गुड। जिसको सुनाई नहीं दिया इसका मतलब है उनका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला। जिसको सुनाई दिया, किसी को सुनाई हाँ दिया? जिसको सुनाई दिया इसका मतलब है ब्रह्मरंध्र खुला है। ठीक है, बस इसलिए शिमाता जी कान, हम लोग ने किया ना अभी, जैसे शिमाता जी ने कान में उंगली रखने को बोला, फिर बाद में अभी छोड़ दो बोला, कहाँ से सुने? वो तो सहस्रा से सुने, है ना? ओके, अभी सहस्रा खुला कि नहीं ये देख लीजिए। राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर, लेफ्ट हैंड शिमाता जी को, राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स शिमाता जी, राइट हैंड 2 इंचेस above the head. Retournez votre langue. राइट हैंड सर के 2 इंच ऊपर रहेंगे और महसूस करते रहेंगे वाइब्रेशन आ रहे कि नहीं और ब्रह्मरंध्र खुल रहा है कि नहीं। 2 मिनट इंतजार कीजिए, विल वेट फॉर 2 मिनट्स। अभी जिनका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला, जिनका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला वो लोग बताइए विचार कम हो रहे कि नहीं। Whosoever Brahmarandra is not open, can you please observe and let me know if the thoughts are reducing? क्योंकि जब जैसी कुंडली जागृत होती है ऊपर आती है तो आत्मा भी ऊपर आ जाता है, परमात्मा आत्मा को खींच लेता उधर। तो वहां से जब देखने लगते हैं तभी हम विचारों को भी देखने लगते हैं, क्योंकि वर्तमान में आ जाते हैं। Once the kundalini rises, along with that, the Paramatma actually pulls the Atma to itself, and we start observing our subtle system from there. Once we start observing our subtle system from there, we even start observing our thoughts. So now let me know, for people who don't have the Brahmarandra open, are you able to observe the thoughts? Meaning the thoughts are reducing or not? अलका दीदी आपका ब्रह्मरंध्र नहीं खुला ना? नहीं भैया, अभी हाँ, मैं तो अभी चेक विचार को महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं। महसूस कर पा रहे हो? ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हम ना लीन हो रहे हैं श्री माता जी में और बाहर कुछ और प्रतिक्रिया चल रही है, बस लीन हो रहे हैं अंदर से, ऐसे फील हो रहा है। वेरी गुड, माँ के सिंह के पास। बहुत अच्छी स्थिति माँ की ऐसी। माता जी भैया, लता सहस्त्र भैया हम हाँ हाँ, कान को बंद किए तो मेरा आवाज, आपको आवाज आ रहा था सहस्त्रार से। वेरी गुड वेरी गुड। वो एकदम कस के बंद किए थे कि अभी हाथ ऊपर है ना, सर के ऊपर? हाँ भैया, अभी महसूस हो रहा है वाइब्रेशंस और ब्रह्मरंध्र खुलने का? हाँ हमारा महसूस हो रहा है। ठीक है, हल्का हल्का ठंडा गर्म मन की। ओके। गर्म आ रहा है इसका मतलब है हमको क्षमा करना पड़ेगा। ठीक है, वो लॉर्ड्स प्रेयर बोलना पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। हर दिन लॉर्ड्स प्रेयर बोलना पड़ेगा, तभी गर्म नहीं आएगा। अलका दीदी आप बोलिए, आपका हाँ भैया, विचार अभी थोड़ा कम कम हो रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है ये हल्का दीदी। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, राइट हैंड नीचे लाइए, अभी लेफ्ट हैंड सर के ऊपर। विल ब्रिंग योर राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड on top of the head. Yeah, Angelica Didi, please tell me, unmute and tell me what's it? जय श्री माता जी। हाँ, बोलिए। लेफ्ट हैंड में थोड़ा गर्म है सहस्त्रार में। कौन बात कर रहा है? बाबूराव। बाबूराव, हाँ। लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है? गर्मी है सहस्त्रार में। तो आपने विटनेस सेशन अटेंड किया कोई? हाँ, एक क्लास अटेंड किया है। हाँ, तो उसमें माँ बोलती है ना, अगर गर्मी आ रही है तो क्यों आ रही है? अगर गर्मी आ रही है इसका मतलब है हमने क्षमा नहीं किया। ठीक है, तो आप भी सुबह शाम लॉर्ड्स प्रेयर बोलिए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ठंडक आ जाएगी।
ठीक है। जय श्रीमती। जय श्री माता जी। एंजेलिका दीदी, प्लीज टेल मी। Yes, my thoughts have not been reducing. Your thoughts have not been reducing, yeah? I feel almost like instead of being in meditation, I feel like I am lethargic. Lethargic, okay. And but the thoughts are always there. Okay, now Even where on is my your hand? sleep. Now where is your left hand? Towards Shrimataji's photograph. Okay, now what we're doing is we have put our right hand towards Shrimataji's photograph and left hand 2 inches above the head. Okay. Okay, is your hand there? Yes. Okay, now that your hand is there, can you observe your thoughts? They're not there. They are not there. Yeah, and this is what we have to practice. So when we do in fact witness sessions, this is what we practice. So what happens is when we put our hand there, Kundalini has risen. When you put your hand, Kundalini rises automatically. It's like a magnet. And with Kundalini rising, the Paramatma, once the Kundalini rises and it touches the Paramatma, the collective consciousness, the divine cosmic power, the Paramatma pulls our Atma to it. And we start observing from that state. And once we start observing from there, the thoughts become lighter and lighter and lighter. And we go to a state wherein we're in Atma state, where we can observe our subtle system, we can observe our thoughts slowly, slowly. So we have to practice this more and more. Now let the Brahmarandra open. Angelika Didi, let the Brahmarandra open nicely. Once it will open, then you can stay there. Okay, now we'll bring our left hand down. Again, we'll take our right hand and put it 2 inches on top of the head. Abhi left hand नीचे ले आएंगे, right hand सर के 2 इंच ऊपर. Now, Angelika Didi, now with right hand up there, let me know again if thoughts are there. Are you able to observe your thoughts? They're not there. They're not there. So now look at it. We are talking and we are talking without thinking. As if this is a computer that's connected to the internet and it's spontaneously speaking. There's no thinking and talking. And this is a state that we have to be there all the time. Thoughtless, spontaneous, and fully aware. So that's why we have 8 sessions in Virat where we practice witness. This witness state. We practice this witness state. And stay there. Yes. Yes, Auntie. Yes, Auntie. I had no, I mean, it was so deep before. Only when you started to talk, I needed to wake up and listen what you're saying. Yeah. Yeah. Okay. Now we'll bring both our hands down and observe the vibrations in both our hands from top of our head. तो अपना दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, अपना तालू भाग से फिर से दोनों हाथों को महसूस करेंगे और ऐसे ही महसूस करना साक्षी तत्व का प्रैक्टिस करना है. Now observing like this is a way to practice witness state. And this is a tapasya, and we are been blessed with such a beautiful collective, and we have to fully exploit it to our benefit. हम लोग को ये पूरी कलेक्टिव का इस्तेमाल करके अपने को बहुत गहरा निकाल लेना है तपस्या में. ठीक है, अभी क्या करेंगे? अभी हो गया ये. अभी हम फुटसोक की तैयारी करते हैं. लेट्स अरेंज फॉर फुटसोक. 2 मिनट में फुटसोक शुरू करते हैं. We'll start फुटसोक in 2 minutes.
चलिए शुरू करते हैं। विल स्टार्ट। हाँ, विल स्टार्ट फुट सोप। नाउ विल पुट 2 fistful ऑफ सॉल्ट। 2 मुट्ठी भर नमक। फिर हम लोग लेफ्ट हैंड श्री माता जी को और राइट हैंड से बंधन देंगे पानी को। विल पुट आवर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स माता जी, विद राइट हैंड विल गिव बंधन। ओम त्वमेव साक्षात श्री समुद्र देवता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, प्लीज मेक दिस वाटर लाइक सी वाटर, मेक दिस सी वाटर, रिमूव ऑल द imbalances in our chakras and nadis। अभी दोनों पैर पानी में। विल पुट बोथ आवर फीट इन द वाटर। नाउ विल पुट आवर राइट हैंड टुवर्ड्स श्री माता जी, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई। अपना राइट हैंड श्री माता जी को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर रहेगा। फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स ऐसे ही रहेगा। पेशेंस, साइलेंस एंड विटनेस। अभी हमने जैसे प्रैक्टिस किया, तो हम पेशेंस से रहेंगे, निश्चित रहेंगे और साक्षी भाव में रहेंगे। राइट हैंड श्री माता जी को और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, और पानी, पैर पानी में। आंखें खुले रहेंगे, श्री माता जी की बिंदी देखते रहेंगे। वी विल कीप आइज ओपन, कीप लुकिंग एट श्री माता जी बिंदी। When we are looking at Shrimati Bindi, that means we are surrendering our thoughts, we are surrendering our attention। अपने चित्त को और अपने विचारों को हम श्रीमाता जी को समर्पण कर रहे हैं, इसलिए बिंदी देख रहे हैं। जय श्रीमती। अगर चरण है तो चरण देख सकते हैं श्रीमाता जी। इफ यू हैव द लोटस फीट, लुक एट श्रीमाता जी लोटस फीट।
और महसूस करते रहेंगे कि राइट हैंड की कौन सी उंगली में ठंडी हवा अंदर आ रही है और लेफ्ट हैंड से ठंडी हवा जा रही है कि नहीं. We'll keep observing. If we are absorbing cool air in the right hand fingers and if we are ventilating from our left palm. चलिए अभी दूसरा फुटसोक पैर धो लेंगे और दूसरा फुटसोक रेडी करते हैं. नाउ विल लेट्स वॉश आवर फीट एंड गेट रेडी फॉर द सेकंड फुटसोक.
चलिए अभी 2 मुट्ठी पर नमक, लेट्स पुट 2 fistful of salt in the water. पानी को बंधन देंगे, लेट्स गिव बंधन टू द वाटर। ओम त्वमेव साक्षात श्री समुद्र देवता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमः। श्री माता जी, please make this water like sea water and make this sea water remove all the imbalances in our chakras and nadis. अभी दोनों पैर पानी में, we'll put both our feet in the water and again same thing, right hand towards Shri Mataji, left hand towards sky, right hand Shri Mataji की ओर, left hand आकाश की ओर। पेशेंस, साइलेंस एंड विटनेस, आंख खोल के श्रीमती को बिंदी देखते रहेंगे और ये अगला 10 मिनट हम निशब्द रहेंगे और साक्षी भाव में।
ओके ओके, अभी बताइए, राइट हैंड में आप लोग को पता चल रहा है कुछ? राइट हैंड में हवा आ रही है अंदर और लेफ्ट हैंड से आकाश में जा रही है। आर यू एबल टू फील इफ यू आर ऑब्जॉर्बिंग कूल एयर इन द राइट हैंड एंड इफ यू आर वेंटिलेटिंग फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड? जय श्री माता जी भैया। हाँ जेष्मा दीदी। लेफ्ट हैंड से ऊपर जाता है वो तो महसूस होता है, लेकिन राइट हैंड पे कुछ नहीं समझता। हाँ समझता नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी भी ऐसा ही है? हाँ, अभी सहस्त्रार तो खुला है और हाँ लेफ्ट हैंड से ऊपर कुछ भी जा रहा है ठंडा ठंडा, ओके लेकिन ओके राइट कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको अभी 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 ब्रह्मरंध्र आपका खुल रहा है ना, तो हाँ आप अल्लाह अकबर और लॉर्ड्स प्रेयर करिए, ठीक है? हाँ सेट हो जाएगा। ओके। ओके जेष्मा दीदी। भैया मेरे राइट पैर से ना गर्मी निकल रही है। राइट पैर से निकल रही है, वेरी गुड। और राइट हैंड में कोई भी उंगली में अंदर जा रही है हवा? हाँ हल्की हल्की और लेफ्ट से ऊपर जा रही है। हाँ, पहले क्या होता है, लेफ्ट से अच्छी तरह निकल जाता है, लेफ्ट से पहला लेफ्ट में बहुत अच्छी तरह निकल जाता है, फिर राइट में शुरू होता है, और राइट में जैसे ही आने लगता है ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मरंध्र का भी महसूस होने लगता है, जैसे ही राइट हैंड का सहस्त्रार खुलने लगता है। तो जय श्री जयष्मा। जय श्री माता जी भैया। हाँ जयष्मा दीदी। हाँ, बहुत अच्छी वाइब्रेशन से आ रहा है। पूरा राइट हैंड एकदम ठंडी हो गई है और लेफ्ट हैंड भी वेरी गुड, आकाश की ओर जा रही है। लेफ्ट हैंड से बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा वाइब्रेशन से आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। माँ की असीम कृपा। और ये देखना है कि राइट हैंड में सभी उंगली में 5 उंगली, मूलाधार, भावसागर और सहस्त्रार, सब में आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। और लिवर, लिवर पे भी ठंडक महसूस होता है। सो व्हाट वी हैव टू ऑब्जर्व व्हेन यू आर डूइंग फुट सोक इज, आर वी ऑब्जर्विंग कूल एयर फ्रॉम ऑल द 5 fingers, or if it has started from 1 finger, that's okay. It will slowly, because we know who is observing it, only Atma can observe it. And then we have to observe 5 fingers, Mooladhar, Bhavsagar and the Sahasrara in the right palm. एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगता है। इसलिए Bhavsagar हमको, तो थोड़ा गर्म है. I mean, I can हाँ feel क्या the आंटी? Bhavsagar a little bit. Repeat it a little louder, आंटी। Okay, so even if Bhavsagar is a little bit ठीक है। warm. So Bhavsagar, हाँ. who is observing this, आंटी? हाँ मुझे मालूम है. आत्मा. Yeah, then the ऊपर से Atma is observing it. It's only a हाँ. matter of time. It's only a matter of time. It will clear off. We just have to keep observing it. ठीक है, चलिए अभी ईगो सुपर ईगो ड्रॉप करते हैं 7 times into water. We'll drop ego super ego 7 times in the water. And from Lalit Chakra, Shri Chakra, from the shoulders, let's remove heat from the shoulders and drop it into water. अपने कंधों से जो भी गर्मी है निकाल के पानी में फेंक दीजिए। फिर अपना पैरों से, यानी स्वादिष्ठान से लेकर पैरों के तले पानी में फेंक दीजिए जो भी गर्मी है। Please remove heat from the swadhisthana along the legs, throw it into water 7 times. 7 बार पानी फेंक दीजिए। अभी दोनों पैर धो लीजिए। प्लीज वॉश बोथ योर फीट। गिव बंधन टू दिस वाटर। लेट्स गिव बंधन, ये पानी को बंधन देंगे और अपने खुद को कुंडली उठा के बंधन देंगे। विल रेज और कुंडली एंड टेक बंधन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, श्रीमाता जी को थैंक यू बोलेंगे। श्रीमाता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लियरेंस सेशन। श्रीमाता जी अभी 7:05 को मिलेंगे। वी विल हैव ए ब्रेक ऑफ 9 minutes नाउ एंड विल मीट एट 7:05 फॉर शू बीट। दोनों चप्पल ले आइए, 7:05 को मिलेंगे शू बीट।
Please bring both your chappals, both your shoes. We are taking a break now and we'll meet at 7:05. Till then, if someone has an experience to share or has a question, please ask. बाकी सब break पे जा सकते हैं. Everyone else can go for a break. If anyone has an experience to share or has a question, please share. जयश्री मेहता जी. हाँ जयश्मा दीदी बोलिए. मैं बाबूराव बोल रहा हूँ. हाँ बोलिए मेरे को थायराइड है. हाँ. तो 3.5 रहने का है और 10.5 है. हाँ. तो मैं रेगुलर कर रहा हूँ 5-6 साल से. हाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ 5-6 साल से क्या कर रहे हो? आप सहयोग में है, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं. ओके. तो कांस्टेंट में ही मैं तभी बोला था ना, लेफ्ट साइड पे थोड़ा गर्मी आ रहा है, राइट हैंड में ठंडा हाँ, रहे. विशुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर सुबह और शाम करिए, लॉर्ड्स प्रेयर सुबह शाम करिए. ठीक है, ये करिए 3 महीना कंटिन्यूअसली, 3 महीना. और फिर बाद में देखिए, जैसे अभी लेफ्ट हैंड शिमाता को रखिए और राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे रखिए. प्लीज ओपन योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स शिमाता जी एंड राइट हैंड लेफ्ट विशुद्धि पे रखिए. अभी मेरे को बताइए, जहां हाथ रखा हुआ गर्म है कि ठंडा है? अभी थोड़ा गर्म है. ओके. और लेफ्ट हैंड की कौन सी उंगली में ठंडी हवा आ रही है? तभी आ रहा था, अभी नहीं. अभी देखिए, अभी पहले आप कलेक्टिव थे, समष्टि हो गए, अभी आप अकेले हो शिमाता के सामने, है ना? अभी देखिए, अभी अपना खुद का वाइब्रेशन सही है. अपने औकात में आ जाते हैं हम लोग शिमाता के सामने, है ना? खोलिए लेफ्ट हैंड, खोलिए. अभी आ रहा है, फर्क आ रहा है? आ रहा है. आ रहा है ना? बस सब बहुत आसान है, सहयोग बहुत आसान है. शिमाता जी पूरी खुल के सिंपल कर दिया हमको. लेफ्ट हैंड में कितनी उंगली मार रही है अभी? कितनी उंगली मार रही है अभी? हाँ जी. अभी 5 में आ रहा है, थोड़ा हाँ थोड़ा. ठीक है. तो ऐसा आपको पूरा ठंडा करना है लेफ्ट विशुद्धि. ठीक है, बहुत सिंपल है ना? हाँ बस अल्लाह अकबर सुबह शाम करिए, तो क्या होगा कि सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा आपको. अल्लाह अकबर और लॉर्ड्स प्रेयर करोगे 3 महीना सुबह शाम, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी हाथों में. और फिर हाथ रखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा क्लियर हो जाएगा, सभी उंगली में आएगा. फिर उसके बाद जहां हाथ रखा हुआ ठंडा हो गया, फिर थर्ड स्टेप ब्रह्मरंध्र खुल गया. ये 3 स्टेप होना है. ठीक है. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. हाँ जयश्मा दीदी बोलिए. मेरा है ना थोड़ा सा ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है, काफी साल से चल रहा है, तो उसके मुझे लिए नहीं मालूम क्या होता है वो. ग्लूकोमा दाई. आई डोंट नो, प्रॉब्ली यू शुड टॉक टू वाशी. ग्लाकोमा बेटी आंखें के, हाँ ना? आंखें के. हाँ तो ड्रॉप करना है. नहीं, ड्रॉप्स तो उन्होंने मेडिसिनली दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सत्युगा मैं कैंडल कर सकती हूँ क्या, वही पूछने का था. हाँ क्यों नहीं. ओके. कैंडल को वो कैंडल को कुछ नहीं करता है. ओके. अभी उसके लिए ग्लाकोमा is something to do with the pressure inside the eye. Yes. वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है. मेरे भी है. हाँ आप मुझे महसूस किया, कल नहीं किया, ड्रॉप नहीं किया मैंने. थैंक यू. जय श्री माता जी. सभी दिन करना है, नहीं तो ब्लाइंड हो सकते हैं. प्रेशर कम होना है, इससे प्रेशर कम होना है. वो नहीं डालते तो ब्लाइंड हो सकते हैं हम. नहीं, pressure is balanced because I am putting eye drops every particular time. He preferred one eye drops. Oh, you have to put every particular every day, time. In the particular time. That is, the time is very important for the. No, every day, once or twice. Yeah, once at night only. And no, it's okay. It's okay. Yeah, if you forgot some time at the same time, you put it later. It's okay. Nothing will happen. Like me right now, if I had forgotten, thank you for reminding me. Yeah. But
it is okay. Nothing will Okay. happen. जय श्री माता जी, जय Okay? श्री माता। Thank you so much. Nothing will happen. जय श्री माता जी। जय हीरा श्री दीदी माता बोलिए। जी भैया। हाँ बोलिए। जय श्री माता जी भैया। हाँ। जब लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ था और राइट हैंड श्री माता जी की तरफ और श्री माँ के बिंदी की तरफ देख रहे थे, हाँ। तो पूरे इस सामने की आज्ञा में आधा इंच तक वाइब्रेशन अंदर तक महसूस हो रहे थे। माँ कैसी कुल है? वाइब्रेशन। जय श्री वेरी माता गुड। जय श्री माता। थैंक यू। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दीदी। भैया मुझे ना बहुत दिनों से कमर में बहुत पेन होता है और ये राइट पैर है ना वो पूरा मतलब उसमें भी पूरा दर्द होता है, नीचे बैठ नहीं पाती हूँ और MRI वगैरह सब कुछ करा लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला है भैया। हाँ ठीक है। आपका नाम? मंजूषा। कमर में क्या होता है? कमर में दर्द होता है, दर्द। आप ऐसा I mean, you can walk. नहीं कपाल नहीं, आग्नि। You can walk. और पैर में भी दर्द होता है, राइट पैर में, लेफ्ट पैर में कुछ नहीं होता। कर दीजिए ना, फुटसोक के ही से ही वो सब हो जाता है। नहीं आप ऐसा करिए, आपका ब्रह्मरंध्र। हाँ ये करो। ओके मंजू दीदी, व्हाट आई सजेस्ट, मैं क्या बोलता हूँ, आपका ब्रह्मरंध्र खुला है क्या? वो है ना भैया, गरम महसूस होता है। ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड। गरम गरम महसूस होना, कपाल पे दर्द होना, राइट लेग पे थोड़ा पेन ऐसा होना, ये सब राइट आज्ञा का प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप क्या करिए, सुबह शाम 3 महीने के लिए आप अल्लाह अकबर और लॉर्ड्स प्रेयर करिए। ठीक है, क्या होगा, आपका आज्ञा खुलेगा और विशुद्धि खुलेगा और हार्ट से ब्रह्मरंध्र तक थोड़ा हाईवे बन जाएगा जी। ठीक है, वो करिए। उसके बाद अभी 3 फुट सोक राइट लेग के लिए 3 फुट सोक करना है, यानी दोनों पैर के लिए। बट राइट हैंड शिमाजी को और लेफ्ट हैंड अभी हमने 2 फुट सोक किया, आपने किया था कि नहीं? हाँ जी भैया, अभी किया था ना। हाँ कुछ फर्क आया कि नहीं? हाँ उसमें ना मतलब इससे थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था लेफ्ट राइट हैंड में, लेकिन ऐसा खाली ठंडा हो रहा था। ठीक है, आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव फुट सोक्स करना पड़ेगा, एक के बाद एक। ठीक है, अच्छा। और रोज, और यही साक्षी भाव से देखते हुए। हाँ करेक्ट, साक्षी भाव से। क्योंकि अगर शिमाती के सामने ऐसे, आप ये भी देखिए कि मैं आपको 2-3 मिनट के बाद देखिए कि आंख किधर है, शिमाती को देख रही कि नहीं। अच्छा। नहीं तो कोई और आके आपके आंख इधर उधर मोड़ देगा। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो देखता रहना है। अच्छा, और ये कमर दर्द के लिए भी यही फुट सोक ही है भैया? फुट सोक है, मगर पानी के बारे में बोलते हैं वाइब्रेटेड वाटर पीजिए, थोड़ा लूकवार्म। हाँ वो तो माँ के सामने जल रखती हूँ मैं और सुबह रोज पीती हूँ। वो लूकवार्म पीजिए थोड़ा। अच्छा। और उसमें थोड़ा नमक डाल लीजिए। हाँ। और नींबू और थोड़ा सा शहद। जी। ठीक है भैया थोड़ा सा नमक, वाइब्रेटेड नमक, करेक्ट। ये नमक भैया माँ के सामने रख देती हूँ कटोरी में, तो हाँ ठीक है, अगर वाइब्रेट हो गया उसके बाद में इस्तेमाल कर लीजिए। बहन कुछ भी का घर में उपयोग करते हैं ना वही। अच्छा। ठीक है, आ गई है दीदी, आ गई है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता। पद्मा दीदी, म्यूट ऑन कर दूं क्या दीदी? भैया, Shall I do mute all? Yes, definitely. Yes. Okay. Today we will have only one round of Shubid. Didi, can I ask you to unmute yourself, please? Yeah. भैया, today one round Shubid रहेगा, मुझे प्रोग्राम के लिए जाना है स्कूल में। करेक्ट, श्योर। मैंने आपको मैसेज डाला है, आपको मैसेज डाल के रखा। ओके, सॉरी। या ठीक है, ओवर टू यू दीदी। जय श्री माता। जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू ऑल। हम सब चित्त सहस्रार में रखेंगे।
नजर आकाश की तरफ, दोनों हाथ आकाश की तरफ. Let us keep our attention on Sahasrara. Let us look at sky, Akash Devata, and both the hand towards Akash Devata. Let us praise Akash Devata in our heart. Because of him only we are getting our ascent. His role is very important, and modern science is also depending upon him. So his role in Adhyatma and science both important. So let us thank him in our heart for his help. आध्यात्म के इसमें और साइंस में ये जो आधुनिक युग है इसमें आकाश देवता का महत्वतम रोल है, पात्र है. तो इसके लिए हम आकाश देवता को मन ही मन हृदय में धन्यवाद करते हुए, थैंक यू बोलते हुए आकाश के देवता को भक्ति से निहारेंगे. ओम त्वमेव साक्षात् श्री आकाश देवता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. आकाश देवता को प्रणाम करेंगे. हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए. आकाश देवता, प्लीज ब्लेस अस विद आकाश तत्व, इतर एलिमेंट. हर एक प्रार्थना के बाद चैतन्य में जो बदलाव आता है उसको हम महसूस करेंगे. Let us observe the changes in the vibrations after each and every prayer. हे आकाश देवता, कृपा कर हमें आकाश तत्व प्रदान कीजिए. अब हम हमेशा की तरह पूर्ण गर्दन को ऊपर उठा के आकाश की तरफ देखते हुए विशुद्धि उंगली से कान को बंद करते हुए अल्लाह अकबर एक बार बोलने के बाद उंगलियों को निकालेंगे और फिर से रख के 16 बार अल्लाह अकबर बोलेंगे. एज यूजुअल, lifting our throat fully, looking towards sky, locking our ears with Vishuddhi finger, we chant Allahu Akbar. After chanting one time, we remove our fingers and once again we lock. Maybe this is the technique for remove the heat which is collected there. And after that we chant 16 times. Let us start. शुरू करेंगे. अल्लाह अकबर. चित्त सहस्रार में रहेगा. Keep attention on सहस्रारा, please. अल्लाह अकबर. 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 साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. फिर से हम दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे, सभी उंगलियों को महसूस करेंगे. Let us take both the hand towards sky and let us observe the changes after chanting Allah Akbar.
दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करेंगे. लेट अस डू प्रणाम टू आकाश देवता. थैंक यू आकाश देवता. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. अब हम सूर्य देवता को देखेंगे. सूर्य देवता का मंत्र बोलेंगे. लेट अस टेक सूर्य देवता मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य देवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. प्रणाम करेंगे. श्री माता जी आप ही साक्षात श्री सूर्य देवता हो. कृपा कर हमें श्री सूर्य देवता के समस्त गुण और शक्तियां और ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए. श्री माता जी यू आर साक्षात श्री सूर्य देवता. प्लीज ब्लेस अस विद all the qualities, powers and knowledge of Shri Surya Devata. श्री सूर्य देवता की हिरण्य गर्भिणी शक्ति हमारे पिंगला नाड़ी में स्थापित करने की कृपा कीजिए श्री माता जी. और हमारे इड़ा नाड़ी को और बैकाग्ञा को पूर्ण रूप से शुद्ध करने की कृपा कीजिए. श्री माता जी प्लीज एस्टैब्लिश हिरण्य गर्भिणी शक्ति इन अवर पिंगला नाड़ी. प्लीज cleanse our ida nadi and back ajna Shri Mata ji. अब हम गायत्री मंत्र बोलेंगे. एक एक बीज मंत्र में हम एक एक चक्र में सुषुम्ना नाड़ी में हमारे अटेंशन लेके जाएंगे और सहस्त्रार में बीज मंत्र का एक पोर्शन खत्म करेंगे. उसके बाद सहस्त्रार से ऊपर चित्त उठाते हुए पूर्ण करेंगे एक बार का गायत्री मंत्र. ऐसे हम 3 बार बोलेंगे. नाउ let us chant Gayatri mantra. Let us take our attention in each and every chakra, chanting each Bij mantra, and let us complete one portion, Satyam, and like after that portion in Sahasrara, and after that let us lift our attention above Sahasrara, and let us complete one mantra. Like that 3 times we will chant. अब हम शुरू करेंगे. ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सहस्रार से ऊपर उठाएंगे चित्त को. लेट अस लिफ्ट आवर अटेंशन अबव सहस्रार. ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप. आकाश की तरफ हमारे चित्त को छोड़ देंगे. लेट अस लीव अटेंशन टुवर्ड्स स्काई. लेट अस रिपीट 2 टाइम्स, 2 मोर टाइम्स. और 2 बार करेंगे. ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप. ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूप. कुंडली का प्रवाह को महसूस करेंगे. लेट अस ऑब्जर्व द एनहांस्ड फ्लो ऑफ कुंडलिनी, मदर कुंडलिनी.
जिसको डिप्रेशन का थोड़ा समस्या है, इसको डेली 7 बार कर सकते हैं। हम कलेक्टिव में 3 बार करेंगे क्योंकि राइट साइड वालों को बहुत ज्यादा लेना अच्छा नहीं है, इसीलिए। सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे और पीछे मुड़ेंगे। लेट अस डू प्रणाम टू सूर्य देवता एंड टेक बैक टर्न बैक आज्ञा टुवर्ड्स सन। बैक आज्ञा सूर्य देवता की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, राइट हैंड बैक आज्ञा में रखेंगे। लेट अस कीप राइट हैंड ऑन बैक आज्ञा फेस टुवर्ड्स स्काई। लेट अस कीप आवर आईज ओपन। आकाश की तरफ देखेंगे, आंख खुला रहेगा। हम श्री माता जी को बैक आज्ञा में बुलाएंगे। श्री माता जी कृपा कर हमारे बैक आज्ञा में आइए। बैक आज्ञा का मंत्र लेंगे, महागणेश का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री महाहिरण्यगर्भा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्रीमती जी मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पितरों से जाने अनजाने में परमात्मा के विरुद्ध में किसी भी प्रकार की भूल हो गई हो माँ, कृपा कर हम सबको क्षमा कीजिए। श्रीमती जी कृपा कर हम सबको आत्मोन्नति प्रदान कीजिए माँ। श्रीमती जी कृपा कर हमारे पितरों को आत्मोन्नति प्रदान करने की कृपा कीजिए और हमारे सूक्ष्म यंत्र से उन लोगों के प्रभाव को दूर करने की, हमें उनसे मुक्त करने की कृपा कीजिए। श्रीमती जी, श्रीमती जी, if any mistakes knowingly or unknowingly done by me, my family and my ancestors, please forgive us. Srimati ji, please bless us with ascent. Srimati ji, please bless our ancestors with ascent and please remove their effects from our subtle system. बैक आज्ञा को महसूस करेंगे। लेफ्ट राइट हैंड धरती माता की तरफ, नजर भूमि माता की तरफ। Let us take our right hand towards Mother Earth. Let us look at Mother Earth and observe back ajna from Sahasrara. बैक आज्ञा को सहस्रार से महसूस करें। अब हम दोनों हाथ आकाश की तरफ लेंगे। लेट अस टेक बोथ हैंड टुवर्ड्स स्काई। लेट अस कनेक्ट आकाश देवता विद आवर सहस्रारा। अब हम 3 जगह में अटेंशन रखेंगे, बैक आज्ञा, सहस्रारा और आकाश देवता। हे आकाश देवता, कृपा कर हमारे माध्यम से बहने वाला परम चैतन्य को स्वीकार कीजिए और पूर्ण परिसर में, पूर्ण विश्व में फैलाने की कृपा कीजिए। हे आकाश देवता, please receive the vibrations flowing through us and please spread it in all over the area and all over the world.
10 उंगलियों को महसूस करेंगे. लेट अस ऑब्जर्व ऑल द 10 फिंगर्स. Let us make the habit of vibrating the clouds minimum half an hour a day. रोज हम कम से कम आधा घंटा क्लाउड वाइब्रेट करने की आदत डालेंगे. अब हम दोनों हाथों को जोड़ के आकाश देवता को प्रणाम करेंगे. थैंक यू बोलेंगे. थैंक यू आकाश देवता. थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प. बैक आज्ञा को टप टपाएंगे. लेट अस टैप बैक आज्ञा एंड टेक टर्न. सूर्य देवता को देखेंगे. लेट अस लुक एट सूर्य देवता. Thank you, Surya Devata. Thank you very much for your blessings and for your help. Thank you. Thank you very much. Please receive our pranamas. Please accept our pranamas. अब हम चित्त सहस्रार में दोनों हाथ गोद में चैतन्य को महसूस करेंगे. इस चैतन्य से हम बंधन लेंगे. लेट अस टेक बंधन विद दिस वाइब्रेशंस. धीरे से हर एक चक्र में कुंडलिनी मां ऊपर आते हुए उनको महसूस करना है. Let us feel and confirm that Mother Kundalini is crossing each and every chakra and coming above Sahasrara. Then only Bandhan will be perfect. बंधन लेने के बाद हम चैतन्य को महसूस करेंगे. करमजीत कौर, आपको कुछ पूछना है शुबिट के बारे में? हैंड राइज किया है. अगर आपको कुछ बोलना है बाद में बोल सकते हैं. अगर शुबिट के पहले कुछ शुबिट के बारे में आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं, वो जब भैया बात कर रहे थे तब का कर रखा है. वो ऐसे ही रहेगा शायद. आज हम एक ही राउंड शुबिट करने वाले हैं. मुझे स्कूल में प्रोग्राम्स में जाना है और क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं रहेगा. हम कल बात करेंगे. जो चैतन्य है हमारे हाथ से, इससे हम जहां शुबिट करने जा रहे हैं उस जगह को शुद्ध करेंगे. लेट अस क्लीन द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू डू शुबिट विद दिस वाइब्रेशंस. दोनों हाथ धरती माता के ऊपर. लेट अस कीप बोथ हैंड्स ऑन मदर अर्थ. श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो. आप ही साक्षात श्री भूमि माता हो. है आदिशक्ति, कृपा कर हमें
सामूहिकता में शोभित करने की अनुमति प्रदान कीजिए माँ। आप ही साक्षात से सर्वकर्ता हो श्रीमाता जी, कृपा कर हम सब से सामूहिकता में शोभित करके लेने की कृपा कीजिए और हम सबको शुद्ध निर्मल बनाने की कृपा कीजिए श्रीमाता जी। आदि भूमि माता स्वरूपा में हमें क्षमा करने की कृपा कीजिए श्रीमाता जी। श्रीमाता जी, यू आर साक्षात श्री गणेशा, यू आर साक्षात श्री आदि भूमि माता। प्लीज परमिट अस टू डू कलेक्टिव शोभित। श्रीमाता जी, you are verily you are the doer. Please make all of us to do collective shubit and please make all of us nirmal. Shrimati ji, in the form of Adi Bhumi Mata, please forgive us for doing this action upon you. धरती माता को महसूस करेंगे, ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना महसूस करेंगे, पूर्ण निर्विचार हो जाएंगे। Let us observe Brahmarandra and Sushumna. Let us get into thoughtlessness. दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे। Let us do pranama to धरती माता. Let us give बंधन, बंधन देंगे। आज हम एक ही पर्सनल राउंड करने वाले हैं, तो एक सर्कल डालेंगे। लेट अस पुट वन सर्कल। टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली वन राउंड ऑफ शुबिट, ओनली पर्सनल राउंड। लेट अस राइट आवर नेम, अपना अपना नाम लिखेंगे। अहंकार, प्रति अहंकार, ईगो, सुपर ईगो, डोअर मेंटालिटी, कर्ता भाव, श्रेष्ठता का भाव, हीनता का भाव, इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, aguru and kuguru problems, all types of impure knowledges collected from them, अगुरु और कुगुरु के समस्याएं, सभी प्रकार के अशुद्ध विद्याएं, अशुद्ध इच्छाएं, सभी प्रकार की राक्षसी वृत्ति और प्रवृत्तियां, all types of devilish attitudes, impure attention, अशुद्ध चित्त, impure attention of others on me and impure my attention on others, दूसरों की मेरे ऊपर रहने वाला अशुद्ध चित्त और बार बार दूसरों के ऊपर जाने वाला मेरा चित्त। अभक्ति, अश्रद्धा, असमर्पणा मनोभाव, लैकिंग इन कलेक्टिवनेस, सामूहिकता में रहने की इच्छा शक्ति की कमी, क्षमाशीलता की कमी, समग्रता की कमी, हमारे अंदर की आत्मविश्वास की कमी, lacking in confidence, lacking in forgiveness, lacking in integrity, integration, all types of minute problems from my family members, social life, from parents, from ancestors, from working place, मेरे परिवार से, समाज से, पेरेंट्स से, पितृवंश से और कार्य क्षेत्र से आने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं, आर्थिक समस्याएं,
अभी किसको कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा. इफ यू वांट टू एनीथिंग what you get in your introspection, please write. आंतरिक परिवर्तन होने में इच्छा शक्ति की और उसको अपनाने की कमी, वो लिख सकते हैं. Lacking internal transformation, the desire power, and to adopt that in our daily life. Still we are outward. हो गया तो एंड में let us finish this round. All types of minute problems and badas in the path of my ascent. मेरे आत्मोन्नति के मार्ग में आने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अड़चने और बाधाएं लिखेंगे और इसको बंधन देंगे पूर्ण चित्त सहस्रार में और वाइब्रेशन के ऊपर. लेट अस गिव बंधन कीपिंग अटेंशन ऑन सहस्रारा एंड ऑन वाइब्रेशंस, बीइंग इन थॉटलेसनेस, पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए. इसको हम श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ेंगे. लेट अस सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी विद आवर इमोशंस एंड इन आवर लैंग्वेज. हमारे भाषा में हमारे भावनाओं के साथ हम खुद इसको श्री माता जी के चरण कमलों में छोड़ देंगे. और अब हम राइट चप्पल लेंगे. लेट अस टेक राइट चप्पल एंड गिव बंधन. लेट अस गिव सम वाइब्रेशंस. थोड़ा बंद चैतन्य देंगे, इसको शक्तिशाली बनाएंगे. अब हम हमेशा की तरह आकाश की तरफ देखते हुए चित्त सहस्रार में लेफ्ट हैंड को महसूस करते हुए पूर्ण निर्विचारिता में रहते हुए बहुत हल्के हाथों से धरती माता का आदर करते हुए हम शुभित करेंगे. As usual, looking towards sky, observing our sahasrara and left palm, being in thoughtlessness. Let us shubit slowly, respecting Mother Earth. Let us start. शुरू करेंगे. जो चैतन्य अंदर आ रहा है उसको अंदर लेंगे. Let us receive the nectar and take it to right hand from Vishuddhi. लेफ्ट हैंड पे उंगली को महसूस करेंगे. Let us observe left palm, fingers. राइट स्वादिष्टान को देखेंगे. Let us observe right swadhisthana from Sahasrara.
राइट स्वादिष्ठाना, लेफ्ट भवसागर देखेंगे। राइट स्वादिष्ठाना एंड लेफ्ट भवसागर फ्रॉम सहस्रार। सहस्रार को छोड़ेंगे नहीं, सहस्रार से रहते हुए हमारा अटेंशन लेके जाना है। महसूस कीजिए अभी लेफ्ट नाभि ओपन हो रही है। राइट लेफ्ट भवसागर में प्रॉब्लम है। लेफ्ट भवसागर और लेफ्ट स्वादिष्टान को देखेंगे। लेफ्ट मूलाधार के ऊपर दबाव है, वो कहाँ से है देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्टाना लेफ्ट भवसागर। लेफ्ट मूलाधार को देखेंगे। लेट अस लुक एट लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट भवसागर। लेफ्ट विशुद्धि। लेफ्ट महसूस, लेफ्ट भवसागर अभी भी क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो हम लेफ्ट भवसागर में अटेंशन रखेंगे। लेट ऑल ऑफ अस कीप आवर अटेंशन ऑन भवसागर।
देखिए लेफ्ट भव सागर को क्लियर करते समय लेफ्ट आज्ञा भी ओपन हो रही है। टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में किसी अगुरु कुगुरु का चमत्कार को देखने का आदत है तो छोड़ देंगे। आज्ञा ईगो, ईगो अहंकार, प्रति अहंकार, सुपर ईगो, या वो सहस्रार, सहस्रार से ऊपर जाएंगे। सहस्रार के ऊपर से लेफ्ट हार्ट को एक बार देखेंगे। लेट अस लुक एट लेफ्ट हार्ट फ्रॉम अबव सहस्रार।
above Sahasrar. Okay, रुकेंगे. Thank you, Srimati ji. Let us stop. Let us collect this and throw towards sky. पंचतत्वों के हवाले करेंगे. इस जगह को शुद्ध करेंगे चैतन्य से. Let us clean this place with the vibrations. Let us give बंधन. बंधन देंगे जब तक इस जगह से हमारे हाथों में चैतन्य न लगे. Till we get vibration from this place, let us give बंधन. इस जगह को श्री माता से प्रार्थना करेंगे. Let us pray. श्री माता जी, please establish श्री गणेश principle, गणेश तत्व in this place. श्री माता जी, कृपा कर इस जगह में श्री गणेश तत्व को स्थापित होने दीजिए. अब हम चप्पल को बंधन देंगे शुद्ध करके. थोड़ा चैतन्य भी देंगे. Let us give vibrations also to the चप्पल. अब हम हमारे हाथों को बंधन देते हुए शुद्ध करेंगे. Let us clean our hands, giving बंधन. We can take vibration from मूलाधार to all the 5 fingers. मूलाधार से 5 उंगलियों में हम चैतन्य को 5 उंगलियों से लेके जाएंगे. कर सकते हैं चाहिए तो. दोनों हाथ धरती माता के ऊपर. Let us keep both the hands on Mother Earth. Thank you श्री गणेश. Thank you आदि भूमि माता. Thank you श्री माता जी. आपने हमसे सामूहिकता में शुभित करा के हमें शुद्ध करने की कृपा किया. धन्यवाद माँ. धन्यवाद श्री माता जी. धरती माता का चैतन्य महसूस करेंगे. इस चैतन्य से बंधन लेंगे. Let us take बंधन with these vibrations. जय श्री माता जी. जय श्री माता टू ऑल. अगर हमारा भवसागर का स्थिति कैसा है, अगर हमको शरीर में महसूस नहीं होता है, आयुर्वेदा और दूसरे डॉक्टर्स ने बहुत आसानी तरीके से इसको पहचानते हैं. कोई भी आम इंसान भी इसको देख सकता है. जैसे अगर जॉन्डिस है तो चावल में हम हमारा यूरिन को डालते हैं तो वो येलो टर्न होगा. वैसे ही हमारा मोशन पास करने के बाद, टॉयलेट में जाने के बाद, हम एक बार कमोड को पीछे मुड़ के देखेंगे पानी डालने से पहले. अगर आपका टॉयलेट पानी में तैर रहा है तो आपका भवसागर अच्छा है. अगर वो डूबा हुआ है
तो आपका भवसागर में प्रॉब्लम है। ये बहुत सिंपल एक टेक्निक है हमारे भवसागर को देखने का, स्थिति हम महसूस कर सकते हैं वैसे। इफ यू वांट टू know about your Bhavasagara, if you are not understanding by your vibrations and all, you can, after passing stool, you can see before putting the water, flushing it out. You once you look at whether your stool is floating or it is went inside the water. Whether it is not, it is floating, then your Bhavasagara is good. It is very easy technique. The Vaidyas, Nati Vaidyas, we say that in the forest and area and all, they use this technique, and in Ayurveda also they use this technique. Okay, जय श्री माता जी। आज मुझे प्रोग्राम में जाना है, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, कल बात करेंगे। वो कोई दीदी राम भैया से पूछ रहे थे, बच्चा पैदा हुआ है भाई के, हम ध्यान कर सकते हैं क्या? हम ध्यान सब कुछ कर सकते हैं, श्री माता जी का प्रतिमा का पूजा भी कर सकते हैं, मगर किसी का नियर क्लोज रिलेटिव्स में डेथ होता है, तब श्री माता जी ने थोड़े दिन के लिए मना किया हुआ है। ठीक है, ओके, जय श्री माता जी। हैव ए निर्मल डे।